So in last class, we are doing this problem, isn't it? So this is your cone and there is particle and this particle is of mass m and this is your angle alpha. So we have to write this Lagrangian of a system and for in a spherical polar coordinate क्या आया था हमारे पास half m r dot square plus r square sin square alpha pi dot square minus mgr cos alpha. यही था ना? This is my Lagrangian of a system. ये हम लोगों ने last class में solve किया था. And we have also identified that my phi is cyclic coordinate. So if phi is cyclic coordinate, then what will happen? Del L upon del phi must be equal to what? 0. उस समय क्या होगा? Del L upon del phi is equal to what? 0. And so why del L upon del phi dot must be conserved. And what is del L upon del phi dot? Is mr square sin square alpha phi must be constant, and this phi dot is equal to c upon mr square sin square alpha. So this is my angular momentum. Now last class I have discussed that what will happen if r is big, then phi dot is very small, and if r is very small, then phi dot is very big. So what will happen? The particle will going down with the very high frequency or very high angular velocity, but it will never reach at the origin, because if it will reach at the origin, then phi dot must be infinity, which is impossible event. So what will happen? So you will see that particle will be just go down and after then it will again come up. So let us try to analyze how it can happen. So we have to go for equation of motion, and obviously we will go for equation of motion is d upon dt del L upon del r dot minus del L upon del r must be equal to what? 0. And from here we can just go for d. So this value we can, हम लोगों ने last class में किया भी था, mr double dot minus mr sin square alpha phi dot square plus mg cos alpha is equal to 0. And you can write this equation as mr double dot is equal to mr sin square alpha phi dot square minus mg cos alpha. So this is my equation of motion. Everyone is comfortable here? है ना? So this is my equation of motion. Now let us try to go for free body diagram. उससे देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है. And obviously, if this will be positive, the particle will go upward, and if this will be negative, the particle will go down. Now look at here. What are these two things? So there are always fight between these and these forces. These are the component of forces along r direction, and you will see that how this can be correlated. So let's try to go for this particular thing. So this is my particle, this is my alpha, this distance is r, this is my mg. So we will take a component of mg along r direction. So what will be this value? Mg cos alpha. So look at here, this mg cos alpha, and this is my direction of r cap. This is direction of positive r. So obviously this is direction of negative r. So you can say this is mg cos alpha. So mg cos alpha will always try to take the particle downward along the surface, isn't it? ये particle को इधर slide करने की कोशिश कर रहा है. Now, so there is not only linear motion, there is angular motion also. So if there is angular motion, then what you can see, you can easily. So what you can see, so there is angular motion. So if particle is moving in some rotational motion, and we have some force, and that force is what? Centrifugal force, isn't it?
Yes, sir. अगर कोई रोटेट करेगा तो उस पर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल. सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज m omega square d. D is what? Radius of circle. D is nothing but what? Radius of circle. So what will be component of this force along this direction? There are two component. एक कंपोनेंट क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में आएगा, and another component will be in this direction. So this component will just produce the normal force. Obviously mg have also one component along this direction. That will tell you all about the normal force. So this will be go along this direction. So this angle is alpha. This angle is 90. What will be this angle? 90 minus alpha, isn't it? Yes, sir. 90 minus alpha. So you will take the component along this direction. So this value is m square d cos 90 minus alpha, isn't it? And what is cos 90 minus alpha? Is nothing but what? Sin alpha, isn't it? होगा ना? So you have m omega square d sin alpha. Okay. Now what is d here? D क्या होगा? What is d? What is d? This is r. This is d. So r sin alpha, isn't it? So m omega square r sin alpha. This is your d into 1 sin alpha is also there. What is omega square here? What is phi dot? So this will be m phi dot square r sin square alpha. So now you can see this is exactly this force. So what is this force? ये force क्या बता रहा है? This force will tell you all about the component of centrifugal force along the r cap direction. And this force try to keep particle in upward direction. And this is constant force. Don't worry. This is constant force. So every point this is constant. But this force will be bigger or smaller depends on what is your r and what is your phi dot. Because phi dot and r just inversely proportional to each other. Are you getting my point? Yes, sir. This phi dot and r is just inversely proportional to each other. So if you will put the value of phi dot here, that will be 1 by r is also there. So if r will be smaller, then what will happen? If r will be smaller, then this particle will go. The phi dot will increase. So phi dot will increase, and then it will just try to pull the particle in upward direction. Okay. And now if this term will be smaller than this one, then particle will go downward direction because it will pull downward. So what will happen? Particle will go up and it will again go down. It will again go up and it will again go down unless until it is not going to achieve the equilibrium. So when it is going to achieve the equilibrium, so when let's say r is equal to r naught, it is just trying to achieve the equilibrium. R is equal to r naught पर क्या हो रहा है? ये equilibrium achieve कर रहा है. So you can easily calculate value of phi dot. Or what is your value of phi dot? Is g cos alpha upon r naught sin square alpha. Okay. So this is your answer. So this is your r naught. मैं इस टर्म में लिख रहा हूं. Now TIFR में ये क्वेश्चन आया था. अब आपके लिए होमवर्क है, इसको TIFR का जो क्वेश्चन था इसको पूरा करोगे. Okay. What is this problem in TIFR? The particle is just rotating in a circle of radius r. Particle क्या कर रहा है? Rotating in a circle of capital radius r. Find the angular velocity. Are you getting my point? Yes, sir. है ना? So क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी? आप निकालोगे किसके टर्म में निकालना है आपको? रेडियस के टर्म में. रेडियस ऑफ सर्कल, एक पर्टिकुलर सर्कल पर वो रोटेट कर रहा है. यू हैव टू जस्ट क्या करोगे जरा बताओ? हाउ यू विल गेट? आर नॉट को किससे रिप्लेस कर दोगे? कैपिटल आर से. लगेगी तेज बड़ी पिटाई. हाँ, आर नॉट को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दे. आर नॉट इज दिस पॉइंट. हाँ, दिस इज योर आर नॉट. This is also equilibrium point.
But r by r naught is equal to what? Sin alpha. Sin alpha. So r by r naught is equal to sin alpha. So r naught को किससे रिप्लेस करोगे? r by sin alpha से आप रिप्लेस करोगे. So you will replace r by sin alpha to the r naught and you can get the answer. Isn't it? सर क्वेश्चन एक और बार बताओगे? क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर. So this is your radius r. Are you getting my point? So what will be angular velocity? So if this r is fixed, then this r is also fixed. Isn't it? अगर ये r फिक्स है तो ये भी तो फिक्स होगा. हाँ सर होगा फिक्स. तो हमने इस r के टर्म में लिखा हुआ आंसर, लेकिन हमें किस r के टर्म में चाहिए? इस r के टर्म में चाहिए आंसर. दिस इज दिस r नॉट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज दिस r नॉट. और हमें आंसर किसके टर्म में चाहिए? इन दिस r. So you can easily replace r upon r naught is equal to sin alpha. So r naught can be r by sin alpha. You have to write answer in radius. This is not a radius. This is slant. This is this particular distance. This r naught is this particular distance. Anyway, just try to solve this problem again with yourself. Okay, very famous question. Okay, and now you can easily see what is going to happen. Clear है ये everyone? Yes, sir. Okay, so let's go for next problem. So आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे. So आपको बिल्कुल ही प्रिपेयर रहना है प्रॉब्लम को लेकर के, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Let's try to discuss this thing. So there is two particle and I am just making this thing. So two particle, this is a hole and there is one particle of mass m1, another particle is moving vertical. So m1 is constrained to move in a horizontal plane of surface of table. This is hole, and m2 can move in vertical direction. Okay, so the question is very interesting. m1 and m2 are attached to end of massless string, okay, of length L. Length L. M1 is constrained to move in what? XY plane. Constrained to move in XY plane. M1 and M2 will move in vertical direction. M2 will constrain to move in vertical direction. So what we have to do? We have to find the Lagrangian of a system. So obviously, the first particle is moving in a plane. Yes, two-dimensional plane. Yes, Everyone is agreed. So first particle is constrained to move in two-dimensional plane. So what will happen? Half m1 x1 dot square plus y1 dot square. Is there any potential energy associated to this? No, sir. No. Origin जहाँ पे Origin यहाँ पर है. ये potential energy इसलिए नहीं होगा because it is in horizontal plane. Okay. So there is not any role of gravity. Role of gravity होगा, but it is just balanced by the normal forces. Okay. Because there is not any vertical motion. Okay. Now, the second particle is constrained to move only in a line because it can go in only in a vertical direction. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So that value is equal to half m2 z2 dot square, because I am just putting it z2 for x1 y1 z1 for first one,
This is x1, y1, z1, and this will be value x2, y2, z2. Okay. Now, but there is some potential energy. So I can assume this is my zero potential. So this will be my negative potential. So that value is minus m2g z2. Are you people comfortable? Yes, sir. Yes, But sir. is that this Lagrangian is correct? क्या सही है? Sir, No, sir. constant rule. ये Very good. ये नहीं सही है. क्यों नहीं सही है? Because there are how many degree of freedom? Z1 is equal to 0 use कर लिया. X1 is equal to 0 use, sorry, X2 is equal to 0 use कर लिया. X3 is equal to 0 use कर लिया. क्या use नहीं किया? sir, length. Yes, the दोनों के बीच का मोशन डिपेंडेंट मोशन है. They are not independent motion. So इन Yes, sir. दोनों की डिपेंडेंसी का जो मोशन उसको कहाँ यूज किया? So we have to write on one more story. What will be that story? That story is basically you can write x1 minus g. कहाँ लिखूं मैं? यहाँ लिख दूं? इसको हटा रहा हूं, है ना? Okay. Just write this thing. What you will write? You will write x1 minus 0 whole square plus y1 minus 0 whole square must be L minus Z2 whole square. Clear है ये? कैसे लिखा समझ में आ रहा है? Yes या no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now this is your equation of constraint. So अभी इसका तो यूज नहीं किया है ना? इसका भी हमें यूज करना है. But hold on. This is a very wonderful equation. Can you see the locus of x1 and y1? Sir, 0. Circle. Locus is circle. Center is at 0. 0. But its radius is variable. Variable. Radius is not constant. So from here, I can put r is equal to L minus Z2. Yes या no? पुट कर सकते हैं? Yes, sir. कैसे पुट करोगे? x की वैल्यू क्या पुट करोगे? L minus 2 cos theta. y की वैल्यू क्या करोगे? x1 and y1 is equal to L minus Z2 sin theta. यही तो होगा. Yes या no? And x1 square plus y1 square root under is equal to what? L minus Z2. Isn't it? Radius क्या होगा? Radius of circle is x1 square plus y1 square root under. So this is nothing but r is equal to L minus Z2. So what we can do, we can write also Z2 is equal to L minus R. तो R के टर्म में रहने देते हैं, Z2 को रिप्लेस कर लेते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. So Z2 is equal to L minus R and Z2 dot is equal to minus R dot. What is the significance of this minus? कोई बता सकता है? What is significance of this minus? Sir, जितना Z2 बढ़ेगा उतना radius कम होता जाएगा. Very good. If this will go towards the origin, this will go away the origin, and if it will go towards, then this will go away to the origin. Isn't it? So Lagrangian of a system is half m1 r dot square plus r square theta dot square. यही तो होगा, है ना? x की वैल्यू क्या पुट कर दी? r cos theta and r sin theta. So you can easily write this particular thing. And what will be this value? Half m2 और इसके जगह पर क्या लिख दे? Minus r dot square. m2 minus r dot square plus m2g L minus r. Okay. So this is in the polar coordinate. Obviously this is in Cartesian coordinate, but I know that its linear motion is dependent on r. So this r is nothing but L minus Z2. We know this particular thing, isn't it? So we can use it, and now my Lagrangian is half m1 r dot square
theta dot square plus half m2 r dot square plus m2g l minus r. What are your generalized coordinate here? Generalized coordinate क्या है? Rn theta. Rn theta is your generalized coordinate, isn't it? Now, is that any cyclic coordinate again? Yes, sir. Theta. Yes, theta is your cyclic coordinate. How do you know? You will just go for del L upon del theta is equal to 0. This implies del L upon del theta dot is equal to mr square theta dot. है ना? This is nothing but what? mr square theta dot. And you can, del L upon del theta dot is mr square theta dot, which will be what? Conserve. So theta dot is equal to what? C upon mr square. अगेन ये बताओ, क्या घूमते घूमते ये पार्टिकल ओरिजिन तक आएगा क्या? क्या ये पार्टिकल रोटेट करता ओरिजिन तक आएगा क्या? ओरिजिन पे इनफिनिट हो जाएगा, कभी नहीं आएगा. जैसे ही r की वैल्यू 0 करोगे, देन थीटा डॉट विल बी व्हाट? इनफाइनाइट. Right. तो क्या होगा? ये घूमते घूमते यहां तक एक लिमिट तक आएगा, फिर क्या होगा? अपने आप ऊपर चलता जाएगा. Isn't it? Yes, sir. कैसे जाएगा वो देखते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट प्रॉब्लम का एग्जैक्टली सेम है, बस लास्ट प्रॉब्लम को हमने स्फेरिकल में किया था, यहां पर हम किस में कर रहे हैं? वी आर जस्ट सॉल्विंग इट दिस इनटू पोलर कोऑर्डिनेट. Isn't it? ओके, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? d अपॉन dt del L अपॉन del r डॉट माइनस del L अपॉन del r must be equal to what? 0. That value equal to what? 0. तो क्या हो जाएगा ये? m1 प्लस m2 r डबल डॉट, यहां भी है और यहां भी है, isn't it? माइनस m1 r थीटा डॉट स्क्वायर. फिर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है, यहां पर माइनस और ये वाला माइनस, दिस विल बी प्लस. दैट वैल्यू इज m2g is equal to 0. So now you have m1 plus m2 r double dot must be equal to mr theta dot square minus m2g. Are you getting this thing? So दो फोर्स के बीच में लड़ाई हो रही है. कौन कौन से फोर्स के बीच में लड़ाई हो रही है? Gravity और एक तो m2 के ऊपर जो ग्रेविटी लिख रहा है वो, और दूसरा कौन सा है? ये एक सर्कल में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये m स्क्वायर r, है ना? Isn't it? Yes, sir. So what will happen? ये पॉजिटिव होगा, मींस इट इज गोइंग अवे फ्रॉम सेंटर when this centrifugal force is greater than what? mg. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये तो फिर क्या होगा? ऊपर चलना शुरू होगा. बट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, थीटा डॉट की वैल्यू क्या होगी? स्लो हो जाएगी और r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना? सो इफेक्टिवली फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये वैल्यू, सॉरी, सो इट इज गो इनटू दिस डायरेक्शन. व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन mg, देन दिस विल गो अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस इज कांस्टेंट. सो जो भी बैलेंस कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को? यही दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, isn't it? बिकॉज फ्रॉम हियर थीटा डॉट ऊपर जाएगा तो आर नीचे जाएगा, isn't it? सो यू कैन सी हियर. सो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एंड एक ऐसा भी टाइम आ सकता है व्हेन दिस विल बी लेस देन दिस, देन दिस विल बी गो डाउनवर्ड. एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? What is equilibrium condition? R double dot equal to 0. Very good. R double dot is equal to 0. उस समय क्या होगा? पार्टिकल सिर्फ सर्कल में घूमता रहेगा, है ना? पार्टिकल किस में घूमता रहेगा? That will just move in a circle. So पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक सर्कल में घूमता जाएगा. Okay? Yes, sir. Isn't it? So particle will just move in a circular orbit. So क्या हो जाएगा? जरा देखो तो. So r at r naught, some particular r naught, r dot is also equal to 0 and r double dot is also equal to 0. So ये हमेशा दिमाग में रखोगे.
So what will happen? M R naught theta dot square is equal to what? mg. This is condition of equilibrium. So theta dot is equal to g upon r naught रूट अंडर. तो इस समय पर क्या होगा? सेकेंड वाला पार्टिकल एक पर्टिकुलर हाइट पर क्या रहेगा? रुका हुआ रहेगा, है ना? फर्स्ट वाला पार्टिकल जस्ट रोटेट कर रहा है और सेकेंड वाला पार्टिकल क्या होगा? एक पर्टिकुलर हाइट पे इट विल जस्ट hanged at that particular height. Okay, can you find that particular height? L minus L minus R. Obviously, very good. So R naught is equal to R L minus Z naught. So वो height क्या होगा? That height is Z naught, and that can be written as L minus R naught. या फिर R naught is equal to L minus Z naught पर ये क्या रहेगा? रुका रहेगा, है ना? So this height पर ये L minus Z naught पे रुका रहेगा. You can find this value from here. You can find the value of Z naught, isn't it? मिल जाएगा ना? Suppose this is your angular velocity. सर यहाँ पे m1 और m2 होगा ना? सॉरी दोनों m1 है. ओके मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया. ओके थैंक यू. m1 और m2. वेरी गुड. दिस इज m1, दिस इज m2. तो कहाँ चला गया? दिस इज योर m1, दिस इज योर m2. सो m2 बाई, थैंक यू. ओह, मैंने दोनों को सेम मास ले लिया. m2 बाई m1 r नॉट g. थैंक यू. यहाँ भी चेंज कर ले. व्हाट विल दिस वैल्यू? m2 बाई m1 g अपॉन L माइनस Z नॉट, है ना? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है, हो जाएगा अब ऐसे प्रॉब्लम? यस सर. ठीक है, ओके. हाँ बताओ. सर वो सर नेट का प्रॉब्लम हो गया था सर, स्टार्टिंग से वो कॉन्सेप्ट थोड़ा. नहीं ऐसे नहीं होगा. ऐसे कैसे चलेगा बताओ? हाँ, स्टार्टिंग से सारे कॉन्सेप्ट फिर से बताएं. नहीं सर, जस्ट आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछो क्या है, अदरवाइज फिर से आप वीडियो देखना. ठीक है, जी. ओके. आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना? जी सर. ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा मैं बता करके सेम चीज फिर से बताऊं, है ना? जी सर. ठीक है, जी सर. ओके. आप अगर यहाँ कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो. नहीं सर, Because- जी जहाँ तक सर हुआ था वो क्लियर है. हाँ ठीक है, आप एक बार देख लेना, वहां पर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप बात कर लेना. जी ठीक है, सर. ओके जी सर. ओके गुड. चलो, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम. yes sir. यस सर. तो हो पा रहा है? दिमाग में घूम रहा है क्या करना है, कैसे करना है? हाँ यस सर. चलो थोड़ी सा बात करते हैं. सिर्फ प्रॉब्लम ही करने से नहीं. आप बताओ पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? देखें अगर समझ पा रहे हो कि नहीं, या फिर मेरी तरह आपकी 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 Equation of आपकी constraints. इक्वेशन ऑफ Constant- कंस्ट्रेंट, constant. है ना? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ही पूरी कहानी बता रहा है, isn't it? It will Yes, sir, just tell yes, you what is the story of your problem, isn't it? Equation of constraint अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, then this is cakewalk, isn't it? So let's go for some pendulum family. कुछ पेंडुलम फैमिली पर चलते हैं, ठीक है? और आपके एग्जाम में मेनली पेंडुलम फैमिली पर ही कहानी बनती है. ओके चलो. So first let's start with what? Simple pendulum. Simple pendulum is not so simple. When it is simple, when it is simple, बताओ. So small angle. When you are taking the approximation of small angle, then it is simple. Otherwise, it is very, very dangerous system. Okay, very, very dangerous system. So let's go for simple pendulum. By simple pendulum होता क्या है? There is one big rod and there is some big mass, and this rod is assumed to be massless, and this is moving in vertical direction. किस direction है move? In vertical plane.
So this is moving in what? Vertical plane. Are you getting my point? ये किस में मूव करेगा? Vertical plane में. Okay. So obviously it is moving in vertical plane. So what will happen? The kinetic energy is what? And I am assuming that xy plane is my vertical plane. So what is my kinetic energy? Half m x dot square plus y dot square. I can take this one as origin, and this value is x, y, and z. So this is, but it is in plane. That means z is equal to 0. And what is my potential energy? I can assume this is my 0 potential. So this is in negative direction. So this will be minus mgy. Agreed? ठीक है ना? So I can write Lagrangian half m x dot square plus y dot square minus mgy, and that value is half m x dot square plus y dot square plus mgy. क्या Lagrangian सही है? नो सर. नो सर. Why no sir? सर वो हम लोगों ने कांस्टेंट को तो लिया ही नहीं. हमने ये कहानी कहा कि ओरिजिन से इसकी दूरी क्या है? हमेशा फिक्स है. तो उस कहानी को तो कहना पड़ेगा. तो उस कहानी को कहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एल स्क्वायर. ठीक है. अब ये भाई साहब क्या बतला रहे हैं? Equation of circle. So this particle or this bob is moving in a equation of circle. Are you people comfortable? यस सर. ठीक है. अब इस सर्कल का रेडियस क्या है भाई? एल. पैरामीटर है या वेरिएबल है? पैरामीटर है. तब तो रेडियस तो आर डॉट वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा. तो आप इसको किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाओगे? सर्कुलर पोलर में ले जाएंगे. वेरी गुड. तो जब सर्कुलर पोलर में ले जाओगे तो आर की वैल्यू तो एल पुट कर दे. यस सर. ठीक है. यस सर. अब मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू हैव टू टेक एंगल थीटा. यस. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट शुड आई टेक दिस एंगल थीटा or should I take this angle theta? पुनीत आंसर नहीं दोगे? स्मॉलर एंगल थीटा. स्मॉलर एंगल. बोथ आर स्मॉलर एंगल. हवाबाजी सिर्फ स्मॉलर एंगल थीटा. So first मतलब वर्टिकल से लो या लोगे या हॉरिजॉन्टल से लोगे? vertical. क्यों? क्यों? सपने में आया था. What is logic behind that? सर वो वर्टिकल की विद रिस्पेक्ट मूव कर रहा है इसलिए. वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना ये. क्यों हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा है क्या? If someone is moving with respect to vertical, then that is also moving with respect to horizontal also. सोचो. Think. जी डायरेक्शन में. Very good. Actually, what you have to do? You have to see your particle, how this particle is interacting with some potential, some force, isn't it? Yes sir. So what is the direction of potential or direction of force here? In vertical direction. जो फील्ड है वो पूरा फील्ड कैसा है? ऐसा ही तो फील्ड है. These are the field. कौन सा फील्ड? What are field this? किस तरह का फील्ड है ये? कौन सा फील्ड है? Gravitational field. So you have to see that if this is my vertical direction of gravitational, and if I just want to see how which type of force is experiencing by the particle when I am displacing it with respect to this particular field. Are you getting my point? Yes, sir. Agreed or not? प्लीज ये दिमाग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लोगों को समझ में नहीं आता है.
आप वर्टिकल के रेस्पेक्ट में देख रहे हो बिकॉज योर जी इज इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, तो उसके रेस्पेक्ट में चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो. यू जस्ट वांट टू सी हाउ which type of changes is going to happen when you are moving away or towards this particular vertical direction. So why यहां थीटा किसके साथ लोगे? With the vertical. So x की वैल्यू क्या ले लें? What is x? L sin theta. L sin theta. What is y? L L cos theta. cos theta. Okay, and now you can put x dot is equal to L cos theta, theta dot, y dot is equal to minus L sin theta, theta dot. Now you can just go for this one. So that value is half m L square theta dot square plus mgl cos theta. अगर यहां mgl sin theta ले लोगे तो स्मॉल ऑसिलेशन प्रूफ करते रह जाओगे, कभी भी प्रूफ नहीं कर पाओगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे Yes, अभी देखते हैं. सो लेट्स गो फॉर, इज दैट एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट हियर? कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है क्या? Sir, No, R sir. आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, लगेगा पिटाई दो तेज. तो डाल तो फिक्स है. हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज देयर? 1 1. How many generalized coordinate is there? 1 One. 1. Is that generalized coordinate is cyclic? And what is that generalized coordinate? Is that r is your generalized coordinate? No sir. No, sir. No. sir. What is your generalized coordinate? Theta. Theta is your generalized coordinate. If theta is your generalized coordinate, is that it is cyclic coordinate? No, sir. No. No, sir. जरूरी नहीं है कि हर जगह साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपको मिल ही जाए. तो del L upon del theta is equal to what? 0. Yes, del L upon del theta की वैल्यू क्या होगी? Sorry, del L upon not 0. Not मैं भी 0. बेवकूफी कर रहा हूं. That value is what? Minus mgl sin theta. Now, if you will write equation of motion, what is your equation of motion? D upon dt del L upon del theta dot minus del L upon del theta is equal to 0. And then you will write m L square theta double dot plus mg L sin theta is equal to 0. And now you can see theta double dot plus g upon L sin theta is equal to 0. क्या इसको सॉल्व कर लोगे? No, sir. हाँ, कर लोगे सॉल्व? No, sir. कौन कौन सॉल्व कर लेगा? This is very difficult to solve. So you will just do some approximation. और यहां sin theta की वैल्यू क्या पुट कर देते हो आप? Just for the small angle you can put theta, then you can find the omega of simple pendulum is L upon G. लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल से ले लेते तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता? Sin theta. Sin हाँ? theta. साइन थीटा. ये वाला पार्ट क्या हो जाता? Cos theta. कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है ना? Yes, sir. है कि नहीं? दैट पार्ट विल बी माइनस कॉस थीटा. और कॉस थीटा को अगर स्मॉल एंगल के लिए लोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2. इजंट इट? Yes, sir. और वहां पर क्या स्मॉल ऑसिलेशन हो जाएगा? No, sir. Are you getting my point? So why it is very important that you have to take that angle with respect to vertical. किसके रेस्पेक्ट में लोगे आप? वर्टिकल के रेस्पेक्ट में लोगे. अब समझ में आ रहा है क्यों हमेशा वर्टिकल के रेस्पेक्ट में लेते हैं? Yes sir. मैथमेटिकली आप किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो, दैट इज नॉट एनी प्रॉब्लम. बट थिंग इज दैट आपको सीखना भी तो चाह रहे हो, है कि नहीं? आपका मेन एम क्या है? किसी भी फील्ड में पार्टिकल को फेंको और उस फील्ड में देखो क्या हो रहा है विद सम कंस्ट्रेंट, इजंट इट? और अभी हम जितने भी प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें किस फील्ड में पार्टिकल को फेंक रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड. सो ग्रेविटेशनल फील्ड में पार्टिकल को फेंक रहे हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, एंड वी जस्ट ट्राई टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यस, Yes sir. यही चीज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में किस फील्ड में फेंकते हो पार्टिकल को? यादर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में.
तो कोई अलग चीज थोड़ी है वहां पर, Yes, sir. है ना? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, या आपको होमवर्क दूं मैं? आपको होमवर्क देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? सर, Yes, वो sir. ओमेगा जी बाई एल होगा ना? क्या हो गया? ओमेगा ओमेगा जी बाई एल, हाँ जी बाई एल, सॉरी सॉरी, चलो इसको टी लिख देता हूं, है ना? जी बाई एल, थैंक यू थैंक यू। थोड़ी बहुत तो गलती होनी चाहिए, है ना? यस सर। गलती होगा तभी तो रटा हुआ नहीं रहेगा, है ना? ओके, सो आप देख रहे हो, देखो मैं जानबूझ करके आपके टाइम को डिले कर रहा हूं, क्योंकि इससे आप सिंक कर पाएगा सारे प्रॉब्लम आपके दिमाग के अंदर, है ना? ओके, सो सिर्फ प्रॉब्लम लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम के अप्रोच को सीखना इंपॉर्टेंट है। आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके। तो चलिए, एक तो आपका होमवर्क है इक्वेशन ऑफ मोशन दे करके रखना, रिमेंबर लास्ट क्लास वाला होमवर्क, वो चाहिए। Yes, sir. और Yes, sir. आप इसके लैग्रेंजियन को लिखने की कोशिश कीजिए, ओके? मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। कुछ भी ऐसा चीज है जो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा। यस या नो? चलो Yes, sir. देखते हैं। सो लेट्स गो फॉर स्प्रिंग पेंडुलम, है ना? ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, स्प्रिंग पेंडुलम। अब हमने क्या किया, रॉड को रिप्लेस कर दिया किससे? एक स्प्रिंग से। दिस इज मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, दिस इज अगेन मूविंग इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन कहने का ये मतलब क्या है? देयर इज ग्रेविटी, ओके? सो माय क्वेश्चन इज दैट राइट डाउन, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट डाउन Lagrangian of a system in a Cartesian coordinate, B polar coordinate, किस कोऑर्डिनेट में? पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसे सेंड करोगे, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे तो पता नहीं लगता, सिर्फ जैसे सीरियल देख रहे हो, देख करके अपना गायब हो जाते हैं। ओनली 2 and 3 people आर जस्ट डिवोटिंग देयर टाइम, है ना? ओके, सो दिस इज नॉट अ योर सीरियल, ओके? जस्ट आप सीखने की कोशिश करोगे। बाय द वे, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए एंगल कहां से लोगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, वेरी गुड, यू विल टेक फ्रॉम वर्टिकल। बट पहले आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखोगे। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 या 1? 2, वेरी गुड। क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? ओनली z इज इक्वल टू 0, ओके? And this spring, you can assume that this spring is ideal spring. Ideal spring means what? It has massless and it can go from minus infinity to plus infinity. Natural length of a spring you can take. Natural length is, let's say, you can take what? L naught. Okay? So just try to go for this. And बाकी प्रॉब्लम को भी आप फिर से कीजिए, और फिर जहां डाउट हो उसके लिए बात कीजिए। सो मंडे वी विल गो फॉर, आई थिंक, लास्ट क्लास ऑफ Lagrangian, एंड देन आफ्टर यू हैव अ डिफरेंट सेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है? मंडे या फिर देखते हैं संडे भी हो पाएगा तो एक दो क्लास ले सकते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं अभी। ठीक है, एवरीवन इज कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व द Lagrangian, है ना? सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और पुराने क्वेश्चन जो मैंने कर रखा है उसको ऐसे मत छोड़िए, उसको भी करने की कोशिश कीजिए, ओके? थैंक यू। सर यस, बताइए इस क्वेश्चन में वो के स्प्रिंग कांस्टेंट है? जी, के स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके सर, ओके, चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir.